Okay, so in the last few classes we have learnt about the wave function. We are treating the electron as a three-dimensional standing wave. जो इलेक्ट्रॉन जो एटम का हिस्सा है उस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा मतलब जो भी बाउंड इलेक्ट्रॉन है an electron which is in the influence of attractive electric field of proton, वैसी जो सिचुएशन होगी we call it bound electron जो एटम सिचुएशन है, and that has a profile of a three-dimensional standing wave. To describe that three-dimensional standing wave we have to define a mathematical function जिसको कि wave function कहते हैं. ठीक है, उस वो मैथमेटिकल फंक्शन क्या बताता है? इट टेल्स यू अबाउट हाउ द एम्पलीट्यूड चेंजेस एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन पे. सो अलग अलग एक्स वाई जेड अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसमें कैसे वो चेंज कर रहा है वो बताता है. तो उसको समझने के लिए फिर हमने वी फाउंड दैट अगर हम एक्स वाई जेड में लटके पड़ेंगे मतलब रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे उसके बारे में. सो वी चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो वेव फंक्शन जो पहले साइमल्टेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था, इनसेपरेबल था. नाउ इट कैन बी सेपरेटेड इनटू थ्री, इट स्प्लिट्स इनटू थ्री कंपोनेंट्स, जिसमें कि दो है सिर्फ थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, जिसको कि हम एक साथ इकट्ठा करते हैं. एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, वी कॉल इट एंगुलर वेव फंक्शन, वो हमने लास्ट में देखा. और एक और पार्ट है जो रेडियल वेव फंक्शन है, जो कि आपको वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड विथ चेंज इन द रेडियल डिस्टेंस उसको बताता है. तो ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है लास्ट फ्यू क्लासेस. एंड इट ऑल्सो लेड टू अ फ्यू इमर्जेंस ऑफ थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर. देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन आपको तीन क्वांटम नंबर देता है, एन एल एम एल. ओके, एंड ईच वन ऑफ दिस टेल्स यू समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. सो क्या क्या आपको हमने बताया था? एन, so three quantum numbers that we learned. One was n, this is the tells you about the energy of the electron. L tells you about the angular momentum. And then there was the component of z component, and it tells you about z component of angular momentum. So अगर z के अलॉन्ग कंपोनेंट फिक्स हो गया तो एक ओरिएंटेशन आपका फिक्स हो जाएगा, यू विल गेट अ सर्टेन. So this is what it is telling you. L is telling you about the magnitude, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है. and this is telling you about the orientation, the direction. So ये जो चीज़ थी इसी को ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टर्नर के, the last part. So this one is also known as, so you have quantization of energy, quantization of magnitude of angular momentum, and quantization of the space, कि स्पेस में किस तरह से थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेड होगा वो वेक्टर, how this angular momentum vector will be oriented in three-dimensional space. That is also specific. That is, it can only have certain specific orientations as given by this theoretical approach, right? So when you have L is equal to 2, suppose आपका L is equal to 2 है, तो this in a three-dimensional space is, it can either be oriented, the vector, the blue line that you see is oriented like this, the z component is fixed along this. When L is plus 1, it is the z component is half of this. देखिए घट गया z component. अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है यहाँ पे, और ये आप जब ये जो पाथ है सर्कुलर पाथ, अगर सोचिए कि एक मोमेंट के लिए सोचिए कि इलेक्ट्रॉन आपका इस पाथ पे ऐसे घूम रहा है, और कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, जैसे आपका थंब पॉइंट कर रहा है, थोड़ा सा उसको टिल्ट करेंगे, द डायरेक्शन, नाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस, ऐसे. अब जो है z कंपोनेंट कम हो गया, उसका जितना पहले था उसका आधा हो गया है, देखिए. और जब और थोड़ा टिल्ट कीजिए फिंगर, अपने फिंगर्स को,
हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए तो पूरा आपका ऐसा बन जाएगा, वर्टिकली ऊपर से नीचे आने वाला। सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज पॉइंटिंग लाइक दिस। फर्दर टिल्ट योर फिंगर्स एंड सो कर्ल इट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ उसको घुमाएं इस डायरेक्शन में जो एरो दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो इस केस में आपका नेगेटिव जेड कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। सो इन सारे पिक्चर्स में आप देखेंगे एरो का लेंथ सेम है, ब्लू एरो का लेंथ सेम है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज सेम इन ऑल दिस पिक्चर्स, ऑल दिस ड्राइंग्स, ओनली इट्स ओरिएंटेशन इज चेंजिंग। एंड द ओरिएंटेशन टू क्वांटिफाई, अब ओरिएंटेशन को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, एंगल या कुछ बताना होगा। तो जेड कंपोनेंट के टर्म्स में इसको किया था। सो जेड कंपोनेंट इज अंडरगोइंग अ चेंज, एंड जेड कंपोनेंट भी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करेगा, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन नहीं होगा। इट कैन ओनली हैव स्पेसिफिक वैल्यूज। द जेड कंपोनेंट कैन बी आइदर प्लस, what I told you, the z component is given by जो कल L बताया था आपको, एल जेड इज गिवन बाय एम एल एच क्रॉस। सो एम एल एच क्रॉस आपका z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो z कंपोनेंट का वैल्यू देखिए, पहले यहाँ पे था, अब ये छोटा हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। z कंपोनेंट इज गॉन, z component is 0 now, z component is negative, is negative minus 1 h cross, right? Z component is now negative, it is now minus 2 h cross like this. ओके, तो देख रहे हैं, तो ये इस चीज को बताता है कि z कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है। और z कंपोनेंट आपने डिफाइन कर दिया एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो आपका ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर स्पेसिफाई हो जाता है कि हाउ द वेक्टर इज गोइंग टू बी ओरिएंटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और इसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, दैट not only the magnitude of the angular momentum is quantized, it is the how it will be oriented in three dimensional space, that is also specific. It can have either either of these five values if L is equal to 2, and similarly जब आपका L is equal to 1 होगा तो +1 से -1 तक होगा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोग देख रहे हैं। तो ये थियोरेटिकली एक प्रेडिक्टेड था। तो जो एंगल जो था वो आप जो देख रहे हैं, और दिस इज योर सॉरी, सो ये z के साथ जो एंगल बनता है वो आपका एजिमिथ कहलाता है। सो दिस इज ओरिएंटेशन। सो z कंपोनेंट फिक्स हो गया, एक्स वाई कंपोनेंट चेंज हो सकता है, z कंपोनेंट एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के, जैसे ml+2 है तो उसके लिए फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज द एसेंस ऑफ इट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पेस क्वांटाइजेशन, दैट इज हाउ द एंगुलर मोमेंटम is going to be oriented in three-dimensional space. Angular momentum is a vector, it has magnitude and direction. So how it is going to be directed, what will be its direction in direction of the vector in three-dimensional space. So that is reflected through this picture. That was in Schrodinger, the solutions of Schrodinger equation also tell us about this. ठीक है, तो तीन चीजें, एनर्जी क्वांटाइजेशन, magnitude of angular momentum quantized, and then quantization of space, three-dimensional space. That is, we are talking about certain values of orientation, that certain types of orientation which is allowed for given value of L. ठीक है, तो ये था। अब ये this is the point which was theoretically जो प्रपोज किया गया था, इसी को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट स्टर्न or Gerlach. That is, so this was the attempt taken by Stern and Gerlach, who tried to do this. All these things I have already told you. This is for your
कंजम्पशन जब आप पढ़ेंगे खुद से, ये मैंने आपको बताया है कि यस देयर विल बी ml कैन हैव 5l, जो अभी आपने देखा यहाँ, क्या देखा, प्लस एल से प्लस एल टू minus L and through 0 plus L then L minus 1 and so on. So इस तरह से करके आपका minus L तक वैल्यू, प्लस 2 से minus 2 तक minus 1 करके वैल्यूज. So total 2L plus 1 number. So number of orientations. So what we see here, number of orientations possible, orientations of vector, angular momentum vector is 2L plus 1. स्पेसिफिकली अब उस जो ओरिएंटेशन में जो z कॉम्प क्या एंगल बनेगा, क्या z कॉम्पोनेंट होगा, तो z कॉम्पोनेंट स्पेसिफाई कैसे होगा, MLH क्रॉस. So the z component, magnitude of the z component, if you specify, तो ओरिएंटेशन अपने आप 3 डायमेंशन में स्पेसिफिक हो जाता है. मैग्नीट्यूड ऑफ z component is MLH क्रॉस. सो z कंपोनेंट यहाँ पे, इसमें z कंपोनेंट 0 हो गया, ml is 0, z कंपोनेंट 0. यू कैन सी दिस कि इसका है ही नहीं, आप ये जो वेक्टर है इसका z कंपोनेंट नहीं है, xy ओनली xy प्लेन में होगा पूरा सारा का सारा. सो इस तरह से दिस इज व्हाट टेल्स यू. अब सो 2l प्लस 1 वैल्यूज होगा माइनस प्लस एल से माइनस एल तक. दिस इज व्हाट वी नाउ अंडरस्टैंड. सो the magnitude we know how. So the जो drawing है हमारा, कैसे हम draw करते हैं, we choose a length determined by this factor and उसको उसका projection z axis पे ml होगा, है ना, उसका component जो z direction में होगा, and that is in contrast to a classical rotating body. When we are considering electron moving around a central, rotating around a certain axis, it can have only certain fixed orientations, with 2l plus 1 number of orientations, as discussed in previous slide. Okay, so we say that orientations is also quantized. Orientation is also quantized. That is, in a 3-dimensional space, it can have only few possible orientations given by this specified by the z component value through the ml quantum number ml. So it was this point that two scientists took up the challenge to prove it. Let's see कि क्वांटम थ्योरी ऐसे ही है या सच में है, या ऐसे ही सब कुछ भी बोलते जा रहे हैं. सो इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना चाहिए, हमें वेरीफाई करना होगा कि स्पेस क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं. ओके, सो वो स्पेस क्वांटाइजेशन को प्रूव करने के लिए ही, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, वेदर इज ट्रू और नॉट, उसी के लिए ये सारा कुछ किया गया था. एक्सपेरिमेंट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज, ठीक है. सो इट कैन rotating body which can take up specific axis. So this was done by two scientists, Otto and Walther Gerlach in 1921. तो स्टर्न और गर्लैक, जो दोनों का सर नेम है स्टर्न और गर्लैक, इसको जोड़ के ये फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको जाना जाता है. और ये ऑर्बिटल एंगुलर, ध्यान दीजिएगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, दे वर ट्राइंग टू सी दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रहा है, ठीक है ना, ऑर्बिटल मोशन से जो आपको एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उसको. सो वेदर दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम really has this specific orientations in 3-dimensional space, is it quantized. So वो space quantized, so their objective was to prove, to verify whether space quantization exists or not. space quantization को prove करने के लिए उन्होंने किया. तो उन्होंने क्या किया था, they took a furnace, source silver atoms को generate किया गया, heated silver atoms, and it was made to pass through this magnet, two magnets, and there was a photographic plate which was put over here. इसमें दो चीजें थी
कि एक था कि अगर स्पेस क्वांटाइजेशन नहीं है और क्लासिक इफ द इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग क्लासिकली देयर इज नो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, तो वो पूरा एक का पूरा एक स्प्रेडिंग ऊपर से नीचे तक अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, रैंडम ओरिएंटेशंस, वो पूरा एक स्प्रेडिंग मिलना चाहिए। अगर ये क्वांटाइज्ड है तो फिर एक स्पेसिफिक एक दो जगह पे ही डॉट मिलेगा, मतलब जो हिट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हिट करेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे वहां पे ग्लो करेगा, वहां पे जो एक ऐसा कुछ दिखने लगेगा, वो इस तरह से डिजाइन था फोटोग्राफिक प्लेट। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि सो दिस इज व्हाट दे हैड डन as we have discussed, there was took a beam of silver atoms which was say in the y direction, जो यहाँ पे देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप z डायरेक्शन पहले से ही मान लेते हैं, ठीक है। So here they say that they are moving in the y direction passing through a magnetic field non-uniform in the z direction. Magnetic field का direction हमेशा z लिया जाता है। So now silver atoms pass through this तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो इसका दो इफेक्ट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ स्मॉल मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इट विल स्टार्ट मूविंग अराउंड, प्रिसेशनल मोशन विल बी इंड्यूस्ड, इट विल स्टार्ट मूविंग अराउंड द एक्सिस ऑफ जेड एक्सिस के अराउंड चारों ओर घूमने लगेगा। So so that will the z component will not change, the precessional motion में z component फिक्स रहता है, जो अभी precessional motion आप समझते हैं कि नहीं। अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ precessional क्या होता है। Precess word precess, do you understand this? xy components will change with time, but so let me tell you what this is. प्रिसेस वर्ड आया, अब प्रिसेस नहीं समझेंगे तो मैं आगे जो बोलूंगा वो भी समझ ही नहीं आएगा, तो मैं प्रिसेशनल मोशन भी आपको बताऊंगा पहले। सो लेट मी जस्ट, आ गया मेरा प्रिसेशन, कहीं मैंने कभी एक स्लाइड में बताया था, या यस, व्हाट वी मीन बाय प्रिसेशन, मैंने लिखा प्रिसेस, व्हाट इज प्रिसेस, सो लेट मी शो यू दिस। ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट यू सी, एक सर्कुलर फ्रेम में मूव कर रहा है और पूरा का पूरा जो उसका ये जो सोचिए कि ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो बीच में जो स्पोक है, ये जो वाइट है रॉड जैसा जो है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, तो वेक्टर भी एक सर्टेन एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज ऑल्सो मूविंग अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, मेकिंग अप अ कोन लाइक थिंग। आप ऐसा इसमें नहीं देखिए ऐसे, सो ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वजह से ये थंब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो ऐसे वेक्टर आएगा थंब, और ये सेंट्रल एक एक्सिस है उसके अराउंड फिर मूव कर रहा है, ये आपका प्रिसेशन है। ये देखिए प्रिसेशनल मोशन, ठीक है, प्रिसेशन, दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रिसेशन। एक सर्कल में पहले आराम से घूम रहा था, अब वो पूरा का पूरा जो उसका जो उसमें से जो एंगुलर, आपने मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल जैसे सोचने को कहा, यू जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करते हो वो आपका मोशन ऑफ द सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है पार्टिकल का, और ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हुआ। अब वो वेक्टर सोचिए जो थंब है वो पूरा का पूरा, ये जो पिंक एरो है वो थंब है आपका, राइट हैंड थंब है, और वो पूरा का पूरा मूव कर रहा है वो ग्रीन वाले एरो के अराउंड। सो कर्लिंग योर फिंगर्स इज वन मूवमेंट which gives it angular momentum vector which is represented by the pink thing, and the pink thing is now moving around that green one, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। सो दिस इज योर प्रिसेशनल मोशन। सो जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस तरह का एक कोन जैसा बनेगा आप उस पे, और जब तक ये कोन पे मूव कर रहा है इसका जेड एक्सिस, जेड कंपोनेंट फिक्स है, एक्स वाई कंपोनेंट चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का। So this is what happens when you apply magnetic field, the angular momentum vector starts moving around that
Z एक्सिस, Z एक्सिस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का है Z डायरेक्शन, और उसी के अलोंग ये घूमने लगता है, इसी को हम कहते हैं प्रिसेशन। ये जो मोशन आपने देखा डिफरेंट एग्जांपल, सो दैट्स व्हाट वी विल बी यूजिंग दिस थिंग इन लॉट of places in spectroscopy while understanding NMR and while processing. So precessional motion is setting in, that's what, तो ये जो एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया प्रिसेस, आपको सब कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैंने द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर विल स्टार्ट प्रिसेसिंग, सो इट विल स्टार्ट बिहेविंग, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वही आपको मैग्नेटिक फील्ड में जो उसका z कंपोनेंट दैट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दैट विल स्टार्ट प्रिसेसिंग अराउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वो z एक्सिस के अलोंग without changing the xy component, without changing the z component will remain fixed. So क्वांटाइजेशन अगर है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, और बाकी अगर नहीं है तो फिर तो वो सब चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर चेंज हो गया तो पूरा फोटोग्राफिक प्लेट पे इधर से उधर एक रैंडम वे में आपका वो स्पार्कल्स दिखेगा, ठीक है, चमकता हुआ, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा। लेकिन अगर क्वांटाइजेशन है तो एट वेरी स्पेसिफिक स्पॉट्स डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, टू और थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन एज प्रेडिक्टेड बाय द थ्योरी, वो आना चाहिए। सो इसी को लेके सो देयर इज अ साइडवे फोर्स, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, साइडवे फोर्स भी लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स आपका एनर्जी बाय along this with the differentiation of ये, so magnetic potential energy and with respect to z, इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको फोर्स जो लगेगा एक एक हर एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड एज मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द टाइम्स द मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड। सो सिल्वर एटम पे ऐसा फोर्स लगेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ये मूव करेगा थ्रू द मैग्नेटिक। अब डिफरेंट, सॉरी, अब डिफरेंट ओरिएंटेशन अगर है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का, तो इट विल लीड टू डिफरेंट म्यू जेड, and that would be, so there will be forces as specified by the quantum theory, और वो स्पेसिफिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बिकॉज ओरिएंटेशन अलग है, और अकॉर्डिंगली फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखना चाहिए। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से, और ध्यान दीजिएगा ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मोशन को हम पहले विजुअलाइज कर रहे हैं, और तब उसमें अगर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल हिट द फोटोग्राफिक प्लेट ऑन सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड लगेगा। तो वहां से जो हीट किया गया, पहले ओवन में हीट किया, जानबूझ के उसको हीट किया गया कि लेट अस गिव एनफ हीट टू द सिस्टम, उसका जो ओरिएंटेशन है रैंडम ओरिएंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर क्लासिकल थ्योरी अगर सही है, तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे वैसे वैसे सारा जो ओरिएंटेशन बदल जाएगा, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द एंगुलर मोशन, और वो काइनेटिक एनर्जी का में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, वो एंगुलर मोमेंटम अलग 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 होगा, वेरी डिफरेंट वैल्यूज, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी देयर, ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट, सब रैंडमली चेंज होगा। और तब आपका क्लासिकल एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे ये पूरा फिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक किया हुआ, दिस वाज द क्लासिकल एक्सपेक्टेशन। What they observed experimentally was they found that only at two locations on this upper half, lower half, on only these 2 points they receive, all the electrons were hitting, and a, a glow was observed. So this kind of observation, so actual observation was this. So these are different pictures of the same experiment, that, so this is the visualization. So actual experiment showed that only at two locations electrons behaving as tiny magnets, they are hitting at only two locations.
on the photographic plate. Or this was the classical expectation. This is quantum mechanically. Yes, quantum mechanical. So so this led to so classically B is the classically expected result, जो कंटिन्यूअस पूरा ऊपर से नीचे तक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक कंटिन्यूअस ग्लो आपको दिखता, वो नहीं हुआ, दो स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही देखा गया. the, and this is the observed thing. The C what we are talking about is this, that so quantum mechanics what is predicted is somehow, so there are two things that was observed importantly, that space quantization exists. ये तो प्रूव हो गया क्योंकि दो ही लोकेशंस पे सिल्वर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हिट फोटोग्राफिक प्लेट पे पाए गए when subjected to such magnetic field. Okay, so space quantization did exist, it was proved, but there was a problem क्या था, दो ही लोकेशन corresponding to two different orientation, which L के हिसाब से अगर L वैल्यू को देखें तो इंटीजर वैल्यू होता है, किसी में भी दो वैल्यू नहीं आएगा, either it can be 3 0 3 like that. दो वैल्यू कैसे आ रहा है, इसका मतलब जो इंटीजर है वो तो इंटीजर वैल्यू नहीं होगा L का. So that was a very peculiar thing that they observed. So these are things that I have just discussed. So continuous spread was expected of Z component in case of classical physics, which was not observed actually, and what we expected as quantum mechanics, something like that, not exactly the same thing, but something like that, that specific orientations is there, something like that was. So silver atoms arrived on the photographic plate, only 2 points that corresponded to magnetic moments of, okay, this प्लस माइनस म्यू बी, दो जगह पे वो ठीक है, जो बोर मैग्नेटन है प्लस म्यू बी एंड माइनस म्यू बी, दो पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू टू स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ जेड कंपोनेंट वो वहां पे पाए. सो ये पिक्यूलियर ऑब्जर्वेशन था. अब इसमें so there was one specific thing that let me just ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि okay, I'll just come back to this part, क्योंकि आपको बीच का अभी उधर पढ़ाया नहीं गया ना, रिजिड रोटर और सब अनसर्टेनिटी वाला, तो वो आपको मैडम पढ़ाएंगी, तो फिर मैं इसको बाद में टेकअप करूँगा थोड़ा, अगेन वी कैन कम बैक. लेकिन हाँ, let us just, so this is what we expected it to be. Just a minute. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या थी कि एक जो चीज हमें समझ में आई कि जो उसमें दो वैल्यूज आ रही थी corresponding, there was two orientations that was observed, that mu z has, the z component has only two orientations, only two values, orientation of angular momentum was observed for silver atoms in the Stern-Gerlach experiment. लेकिन 12+1 का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं और L अगर इंटीजर है तो किसी भी तरह से ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि दो ओरिएंटेशन कैसे होगी. अगर हम एम्पिरिकली इसको सोचें कि क्या करने से वो 2 आएगा, तो L मस्ट बी इक्वल टू हाफ, बट ऐसा तो कभी हमने थ्योरी में बताया ही नहीं. L तो हमने इंटीजर वैल्यू बताया है. सो ये क्या था, अब एक्सपेरिमेंटली ये तो पाया गया कि दो जगह पे है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन है, एंगुलर मोमेंटम है और उसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस भी है. लेकिन ये अब कैसे प्रूव किया जाए कि ये जो L बैक कैलकुलेट करने पे वो L इक्वल टू हाफ आ रहा था, क्योंकि 12+1 में 0 रखेंगे तो यू विल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, 1 रखेंगे तो 3 ओरिएंटेशंस, तो हाफ दो ओरिएंटेशन, दो वाला कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब L का वैल्यू हाफ है. इज इट ट्रू, ये कैसे हो सकता है. तो इसको रिजॉल्व, अब यहीं पे बहुत सोचा गया कि ये क्या है, हाउ वी आर गेटिंग दिस. तो एंगुलर मोमेंटम ये सजेस्ट किया गया
what we are observing, what the Stern and Gerlach observed, was not the orbital angular momentum. It was not due to the orbital angular momentum. ये जो एंगुलर मोमेंटम का सोर्स था कुछ और था, and this angular momentum is arising due to the motion of electron about its own axis, that is spin. So it led to the discovery of spin in this way कि अच्छा इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर ही नहीं घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, सन के चारों ओर भी घूमती है, तो स्पिनिंग जो है ना, अर्थ मूविंग अराउंड इन ओन एक्सिस इज स्पिनिंग मोशन। सो दिस इज सो समथिंग लाइक दैट आल्सो हैपनिंग विथ, माइट बी हैपनिंग विथ इलेक्ट्रॉन। ये सजेस्ट किया गया कि ये ऑर्बिटल मोशन से नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन से होता तो हमारा ये जरूर कुछ दूसरा। सो एंगुलर मोमेंटम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर केस, और वो भी इट वाज, सो दिस वाज कॉल्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सिस पे स्पिन की, इसको ये जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम था जो इलेक्ट्रॉन में पाया गया। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिल्वर 4d10 5s1, okay. So this was then later on considered, defined as spin of the electron, and later on Dirac developed this, combined this with quantum theory, quantum mechanics, using the special theory of relativity, and developed it further. So ओरिजिनल जो श्रोडिंगर इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन से ये नहीं आया था। जो श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पार्ट था स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसको प्रूव करने के लिए वो चले थे, और उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का एक दूसरा सोर्स ढूंढ लिया जो कि स्पिन था। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, you will just look at this. So spin was, then it was put for the point that angular momentum, which is from the just like angular orbital angular momentum, spin angular momentum is also there, and to distinguish that vector, the quantum numbers were defined as s, and then its component along the z-axis was defined as ms, z-axis पे। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एस, सेम पैटर्न इज सेम, एस प्लस वन एच क्रॉस एस हाफ, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर, सो दिस क्वांटम नंबर इज इनवेरिएबल। ये जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये हाफ एक फिक्स्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए एस इज इक्वल टू हाफ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज दिस, एंड फिक्स्ड वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल के लिए फिक्स होगा। ठीक है, सो एंड देन इट्स कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस वही प्लस एल से माइनस एल, प्लस जैसे प्लस एल माइनस एल करते थे, प्लस एस टू माइनस एस, सो प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ऐसे आपका सेम पैटर्न पे z कंपोनेंट डिफाइन किया गया, एंड यू हैड दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दिस वाज द थिंग। और हाँ, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस तरह से। So again, just like we have defined orbital angular momentum, this was so this was the correct explanation for Stern-Gerlach experiment, that it was a non-negative integer. Sorry, L is a half integral, s is equal to half, only one value will be there, and this will be like this. So you can also think it from a point of view why this this explanation is turning out to be correct, because if you look at the configuration of silver, electronic configuration 4d10 5s1, so orbital angular momentum की बात करें, 4d10 complete shell, so net angular momentum will be 0 for complete shell, the all the directions, so that will the net angular momentum will be cancelled out, there is no angular momentum, complete shell, zero angular momentum.
or so a complete shell will have zero orbital angular momentum, because each of these components cancel out each other. वेक्टर एडिशन, वेक्टर को आप ऐड करें, सारा वो जोड़ जाड़ के कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है. One is pointing in +1, other one is pointing in -1. So when you sum up all, a complete shell of electrons, a complete shell will give you zero orbital angular momentum. बच गया 5s1, 5s1, s orbital, L is 0. So this particular electron, L is 0, so zero angular momentum. तो वैसे भी जब हम सिल्वर को ध्यान से देखें, सिल्वर एटम पे जिसपे एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, जीरो एंगुलर मोमेंटम, जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो जो वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, इट मस्ट हैव सम अदर सोर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट other source of the angular momentum is the spinning motion. The spin of the electron was the actual thing. So that's why it was having two different orientation corresponding to plus half and minus half values of the quantum numbers. So ये जो चीज है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा, the magnitude we have discussed, and it is, there's two things that I would like to point out here. When we talk about components of angular momentum, जैसे आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन का देखा एक्स डायरेक्शन में, उसी तरह का एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ इन एंगुलर मोमेंटम. सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, there is uncertainty principle. So these are the operators for angular momentum. ये जो दिखा है operators for angular momentum, Lx, Lz, Ly. Uncertainty principle tells you that if z component is fixed, if so Lx, Ly, Lz, other two cannot be determined. Similar to this, so this Lx, Ly, Lz follow this principle. If one is determined, if one is matlab they can, all of them cannot be determined simultaneously. All three components cannot be determined simultaneously with precision. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक कंपोनेंट फिक्स हो गया, जो कि हमने बताया कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो उसका z कंपोनेंट फिक्स्ड है. अगर z कंपोनेंट फिक्स है, इसका मतलब x y के बारे में हम बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है. तो जब हम वेक्टर से ऐसे दिखा रहे हैं, when we are showing the vectors like this, so there is uncertainty principle tells you that if z is specified, x y you cannot specify. But ये जो ड्राइंग हमने की है, इसमें आपको सारा जो कंपोनेंट है वो x z भी फिक्स हो जा रहा है, x और y भी फिक्स हो जा रहा है. So this is not a true picture. Rather, it should be shown, each one of these should be shown on a cone. So it is good to show. So ये जो +2 -2 है, so as long anywhere on the cone, it will have same z value. The z component will be fixed same. So ये जो एरो है, इसको लेके आप 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कीजिए विदाउट चेंजिंग द एंगल, तो एक कोन बन जाएगा. ये कोन देखिए, ये वाला कोन यहाँ पे है. So ये इस कोन पे जब तक हम वेक्टर को रखेंगे, as long as I put the angular momentum vector on this cone, the z component is same. Z component will be same. जो इसका z कंपोनेंट होगा ये फिक्स रहेगा. इधर भी रखेंगे तब भी वही रहेगा z कंपोनेंट. कहीं भी रखें, इसके पीछे जो यहाँ पे देख रहे हैं, सो एनीवेयर ऑन द कोन इफ यू पुट दिस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर,
z component is same, and so it is correct representation is making this cone and then showing the angular momentum vector, because x and y are not, we cannot specify them. Uncertainty principle tells us that if z is fixed, we are totally uncertain about the x and y component. If z component is fixed, we are totally uncertain about x and y component. Okay, and so it is better to show it on this cone, where, so anywhere on the cone this vector can be placed, and it will have still have the same value of thing. So when it is +1, it is placed over here, here कहीं भी इसको place करें, it will have same value of angular momentum like this. So correct, so this is correct way of presenting z component. Place it on the cone, draw a cone at, and then place it like that. So that is your, so in that way you are accounting for the uncertainty principle involving x, y and z component of angular momentum. If one is fixed, the other two cannot be determined with certainty. उतनी प्रिसीजन के साथ आप नहीं बता सकते. उसी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए we are making this cone like that. Okay, so this is how we place these things. So z-axis, so the angle with respect to the x and y is indeterminate, that is not fixed. Rest is only the z-axis, the angle it makes with z, that is fixed. The z component is fixed, and xy is changing. So this is what we have discussed. So correct explanation, now we understand what we have got, that it is not due the what Stern and Gerlach observed was not due to the orbital angular momentum. It was due to a new phenomena which was projected, that it could be the motion about its own axis, which was at that time called spinning. So you imagine a spinning top, and then further development, it was Dirac who combined it with the thing. So similar to what is there in the way we explain angular momentum. हाँ बोलिए. क्या है? हेलो, कुछ पूछ रहे थे. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. अब स्पिन के बारे में भी हम वैसे ही, जैसे हमने एल के लिए कहा कि 5 कंपोनेंट थे, पांचों को हमने वेक्टर से दिखाया, ओरिएंटेशन दिखाया, और फिक्स्ड ओरिएंटेशन हो गया जेड कंपोनेंट, उसके अकॉर्डिंग वो कोन पे दिखाया गया. वो वेक्टर जो ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर था, उसको हम उस कोन पे दिखाते हैं, और हर एक टाइम जेड कंपोनेंट सेम आता है जब तक वो उस कोन पे है. उसी तरह से जब स्पिन को हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, इसको भी हम दो कोन पे दिखा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू +½ एंड -½ ठीक है, तो ऐसा दिखना चाहिए. So the correct way of showing this thing is that this is your angular momentum due to spin, angular momentum due to spin, and this is, as long as it is put on the cone, the magnitude is s plus 1 h cross, so half इंटू एच क्रॉस. ठीक है, तो ये आपका वैल्यू होगा इसका, और इसका जो कंपोनेंट है ये है z कंपोनेंट विच इज +½ h क्रॉस.
और दूसरा पॉसिबल ओरिएंटेशन है, दैट इज दिस. सो यू कैन प्लेस एनीवेयर ऑन द कोन. अब ये इस कोन पे कभी भी रहेगा. एनी टाइम यू प्लेस दिस ऑन कोन, द मैग्नीट्यूड इज सेम अंडर रूट एस. Same angular momentum, so it will have same s into s plus 1 h cross. The z component you will find it is same, z component is same, right? Spin cases. So that is plus half h cross. अब ये जो, if the angular momentum vector of spin angular momentum vector, this, so this is the angular momentum again, this is due to spin angular momentum is there, and this is again having the same thing, the same magnitude, but now it is pointing in the different direction. And at this time, this component along this is negative, minus, it is pointing in this direction, minus half h cross. So this is to take into account the uncertainty associated with the xy component of the, because z is fixed, you know with certainty what is the z component of angular momentum. तो एक्स वाई के बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, तो इसलिए इट इज बेटर टू शो इट लाइक दिस. तो आपसे नाउ एज अ एमएससी स्टूडेंट, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, यू मस्ट शो द प्लस हाफ माइनस हाफ. उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना. आप सिर्फ प्लस हाफ माइनस हाफ दिखाते, आप इस वाला पहले भूल जा रहे थे, आपको किसी ने बताया नहीं था अब तक. ठीक है. जो स्पिन होता है, स्पिन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होगा. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस कोन, राइट. एंड ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो स्पिन वाला है वो ऐसे है ओरिएंटेड. इसका जो z कंपोनेंट है वो ऐसे है, और आप अप डाउन एरो दिखाते थे ना, उसका मतलब क्या था ये सब समझिए. तो z कंपोनेंट को आप दिखाते थे जब आप प्लस हाफ माइनस हाफ लिखते हैं. It is only, and this component again is useful, contributes to the magnetic moment, और मैग्नेटिक फील्ड में वो फिर एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, और it will start moving. So that is what happened in case of silver atom, where the 4d10 and 5s1, s orbital has zero angle, l is zero, so zero angular momentum, closed shell, zero angular momentum. The only factor that contributed the s orbitals 5s1 electron, they had the spin angular momentum, so two different orientations of the vector was there, and that's why they observed two spots in the on the photographic plate when passed through this atom. Okay, passed through this magnetic field, external magnetic field. तो ये तुम आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक था, और इसी से सारा इस स्पिन का आइडिया आया. और then, so we have already discussed the correct explanation. So this is, in summary, this is what we have for spin and angular momentum. Focus on the angular momentum. Angular momentum has two sources, orbital and spin, orbital motion and the spin. So one case L012 gives you the magnitude, the other ml gives you the component on z axis. The second thing is that spin, it also gives you angular momentum, and it has a fixed value of half, s is equal to half. एक पार्टिकल के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमेशा हाफ ही रहेगा, इट इज नॉट चेंजेबल. और इसीलिए कई बुक्स में बताते ही नहीं है कि एस एक क्वांटम नंबर है. सो व्हाट यू आर लर्निंग हियर, फाइव सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, जिसमें से चार जो हैं एंगुलर मोमेंटम को ही डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए. What you have learned so far? There are 5 quantum numbers total. 4 of them are required to learn about the angular momentum. Which angular momentum? There are two sources of angular momentum. Orbital motion, जैसे कि Earth moving around the sun, उस तरह से आप सोचे. So that is kind of orbital motion. Earth moving on its own axis, day and night जो होता है.
तो उस तरह का मोशन अगर होता है दैट इज स्पिन. बोथ ऑफ द थिंग्स कंट्रीब्यूट गिव राइज टू एंगुलर मोमेंटम. एंड in the same pattern, L into L plus 1 half h under root h cross, S into S plus h cross. So both magnitude and the component of z axis can be defined. And the better way to show these components is this angular momentum is by drawing vectors, by showing by drawing cones and putting the vector on that cone. ठीक है, जिससे कि the uncertainty of the xy component is taken into account. So the spin that, इसके बाद ये सारा आइडिया स्पिन का आइडिया ये पूरा रिवोल्यूशनरी था. मतलब इसके बाद मतलब पूरा आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बहुत सारा चीज बदल गया. देयर वाज स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस, हाफ स्पिन वन, स्पिन टू, स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ऐसे करके लोग बात करने लगे. So this is a very important thing. So now it was, once it was discovered through Stern-Gerlach experiment, it was also found that not just electron, protons, neutrons, all these have spin. And spin is a thing that is, and they also have spin s is equal to half. They have the same angular momentum as the electron. Spin angular momentum for the neutron and proton is same. The quantum number is s is equal to half, and it is inherent property of all the elementary particles. Just like mass, just like charge, spin will always be there. ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जब तक एटम का पार्ट है तब तक उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर चला गया, इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर विजुअलाइज करे वैक्यूम में, उसके पास कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन ऑर्बिटल मोमेंटम होगा ड्यू टू स्पिन. स्पिन हमेशा उसके साथ रहेगा, जस्ट लाइक उसका मास. सो फॉर एनी पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, spin angular momentum will always be there, whether it is bound or unbound. Okay, it is just like mass and charge. It is a inherent property, intrinsic property of that fundamental elementary particle. Okay, और एक चीज सोचिए, food for thought. Proton has same spin angular momentum as electron. तो कौन फास्ट मूव कर रहा हो? इमेजिन, यू आर इमेजिनिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों लट्टू की तरह घूम रहे हैं. दे आर जस्ट स्पिनिंग लाइक अ टॉप, स्पिनिंग टॉप. प्रोटॉन इज 2000 times heavier than electron, but both are having same spin angular momentum. Then which one is moving faster? तो वेलोसिटी तो अलग होगी ना. हाँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं पड़ता. Proton and neutron are heavier if they are moving at, have the same spin angular momentum. A classical picture would be that these two particles are spinning more slowly than electron. Electron will be moving around 2000 times much faster. Something like that would emerge. So there are some other elementary particles which have s is equal to 1, and for that the angular momentum will be spin angular momentum intrinsic to half. So s is equal to, what is important here, this is example is photon. Light का जो है photon, when we visualize it as a particle, it has spin which is given by s is equal to 1. और ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत यूजफुल होता है. ये दिस नॉलेज ऑफ स्पिन, फोटोन हैज स्पिन, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका भी स्पिन है. और इस तरह से जो इंटीग्रल, सो यू नो स्पिन वन पार्टिकल्स ऑफ इम्पोर्टेंट दैट, सो ये पूरा क्लासिफिकेशन बदल देता है आपका. स्पिन वन पार्टिकल, एग्जांपल इज फोटोन. स्पिन हाफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन.
So particles with half integral spin are called fermions, and those with integral spin 0, 1, 2 are called bosons. Example is fermions हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बोसॉन हो गया फोटॉन, the light particle. So it is property inherent to all elementary particles. ये बार बार मैं कह रहा हूँ, spin is a very important phenomena associated with all particles. So we say that electrons and protons are fermions, photons are bosons. देखिए बोस, एनरिको फर्मी के नाम से, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे बोसॉन्स. तो ये पूरा एक दो भाग में बांटने वाला एक स्पिन एक क्राइटेरिया बन गया कि जितने हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले हैं उसको हम फर्मियंस कहेंगे, इनका एक तरह का बिहेवियर होगा, कुछ चीजें कॉमन होंगी इसमें, और जितने इंटीग्रल स्पिन वाले हैं इनका कुछ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर हो, वो बोसॉन्स कहलाएंगे. और ये आपको आगे चल के बहुत काम देगा, ये स्पिन नॉलेज ऑफ स्पिन्स एंड क्लासिफिकेशन इनटू फर्मियंस एंड बोसॉन्स. और इसी को बहुत डेप्थ में जब एनालाइज करते हैं तो एंटायर यूनिवर्स सिम्स टू बी बाइंड. सो यू फाइंड दैट अब फोटोन क्या है, मास जीरो है, लेकिन उसको हम पार्टिकल की तरह विजुअलाइज करें, इट इज ओनली एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी दैट वी आर विजुअलाइजिंग. सो ऐसे ये नेचर ऑफ डीप फीचर ऑफ नेचर जो हम कह रहे हैं कि एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ two kind of things, fermions and bosons. Fermions are the matter, constitute something that constitute matter are fermions, जो भी बना है, और दो fermions को जो जोड़ के रखता है वो है bosons. It is forces that bind the fermions are bosons. So light is the energy, you see the form of energy. When a nucleus is formed, some energy is given out, atom is formed, some energy is given out, and that is representative of the in form of light. So वो जो फोर्स है जो इसको बाइंड करके रख रहा है वो हम कह रहे हैं कि बोसॉन्स है, which is keeping them together. So photons, electromagnetic force, they are always involved in the when two charged particles or two particles are interacting, this is emitted or absorbed. So that represents the kind of force that keeps the two particles together. So photons are representative of the force, electrons are representative of the matter, they constitute the matter, electron, protons and neutrons, they are fermions. So fermions, so entire universe is a assembly of fermions held together by bosons, forces that are converged. So that is what you matter is something constituted by this both. So this classification is very important. So in case of bosons, photons, for your uh, future discussion, this will be important. Photon is important, and we are talking about electron, and then up quark, down quark that constitute protons. So all those things will be important. So quarks, and so these are the whole thing that sets everything apart. So spin is a very fundamental property. Pradeep, yes, Pradeep. Okay, okay. So this is something important. Uh, so if I may summarize it in different way, let me just tell you that, yeah, the spin that we have just discussed. So spin, what we have just is it is that we have just discussed. If we treat it quantum mechanically, we will write a wave function for the spin also, and then that will have a different, it will have different boundary conditions we have already seen
in the fundamentals that whenever you write an equation, you must have to satisfy any standing wave that we have visualized. We have boundary conditions involved. Boundary conditions are important. Okay, so boundary condition will be different, so the equation will also different from what we have been writing for angular wave function based on the orbital motion. So spin will arise because of spin wave function will be different, and its treatment is slightly different. So it is just like that. Spin quantum number is S and ms. Spin quantum number S, spin magnetic quantum number ms, which is the tells you about the Z component. We have just learned about it. So this is what we know. Electrons have orbital motion. They also have spin, and both of them give rise to angular momentum. Right? Angular momentum can is a vector. Vector have magnitude and direction. So we need to describe this. To know the magnitude, we have quantum number L in angular momentum orbital for orbital motion. For the direction, we specify the Z component of angular momentum, and that is given by mlh cross. Similarly, we have just spin has angular momentum, and that magnitude is given by s into s plus 1 h cross. The direction, the orientation of that angular momentum in three-dimensional space will be given by this msh cross. And these values, the quantum number L is variable, like integral integers 0, 1, 2 and so on, whereas ml changes from plus L to minus L. Sorry, this will be minus plus L to minus L. And when we are talking about spin, it is fixed. The quantum number S is fixed, magnitude is fixed, it has only one value, the quantum number. And so if S is equal to half, it can have two different orientation, plus half and minus half, which will be shown by the cone. We have just discussed. So that's okay. So this is total. So you have four set of quantum numbers that describe the angular momentum. Primarily यही चीज है, and this is what you have learned. What we have also seen that in angular wave function we are just plotting. We have also learned. So this is something that we have discussed now. और ठीक है, we will continue from here in the next class. Spin is important.